It's great to be back on pitch side, and I'm sure that the Pakistan fans are extremely happy because this is exactly the kind of performance that was required to stay alive. The series is now 1-all. We spoke about the bowling. Salman Mirza at the top was phenomenal, but he was really well supported by somebody who's also our guest in the studio. We've been joined by Fahim Ashraf and Amir Suhail. Fahim, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. ये जीत बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए बिकॉज पहला मैच पाकिस्तान हारा था. जिस तरह से कम बैक किया है, तो इन बिटवीन जो डिस्कशंस हुई थी मैनेजमेंट के साथ एंड जनरली एक जो पेप टॉक होती है उसके बारे में बताएं कि इस मैच से पहले क्या आपस में डिस्कशन हुई थी कोच की तरफ से भी. देखें, हमारी जो एज अ टीम डिस्कशन हुई थी, हमारी यही हुई थी कि पिछला मैच जो वो गुजर गया, वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में जो आने वाला मैच है. तो हमारे जो एज अ टीम जो बात भी हुई थी ना, तो इसी मैच की बात हुई थी कि जो आ रहा है मैच, उस मैच में हमने कैसे खेलना है, कैसे उसमें परफॉर्म करना है और कैसे उसका हमने सारा प्लान करना है. अच्छा, आपकी बॉलिंग पे थोड़ा आ जाते हैं. जिस तरह से आज आपने कंडीशंस का इस्तेमाल किया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे रीड किया पिच को, क्या असेसमेंट थी, हाउ डिफरेंट इट वाज टू पिंडी. देखिए, पिच पिंडी से तो डिफरेंट थी क्योंकि जो हमने सुना था सीरीज़ से पहले कि पिचेस, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में स्लो पिचेस मिलनी है तो कोशिश ये थी कि वैसी पिचेस तैयार करवाई जाए. लेकिन पिंडी में देखें आप, पिच जैसी तैयार करी थी थोड़ी सी डिफरेंट थी. यहाँ पे हमें अपनी कंडीशन का यहाँ वाली कंडीशन का थोड़ा आइडिया था क्योंकि पिंडी में आप जितनी भी मर्जी स्लो बना लें वैसी स्लो नहीं बन सकती. अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में यही था क्योंकि हमें जो प्रैक्टिस की पिच मिली थी वो भी ऑलमोस्ट सेम ऐसी ही थी. तो यही था प्लान कि पिच को असेस करना है. तो मैं कहता हूँ इसमें जो सलमान और नसीम ने जो ऊपर के 2 ओवर किए ना, उन्होंने बड़ी जल्दी पिच को एक्सेस करके बाकी सारी टीम को जो मैसेज दिया कि पिच यहाँ पे होल्ड हो रहा है. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको जब मैसेज अर्ली पास हो जाता है ना, तो आप चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं. फ़हीम, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा. किसी मैच में आप नया बॉल करते हो, किसी मैच में आप पुराना बॉल करते हो, किसी मैच में आप बिल्कुल बॉलिंग नहीं करते, तो कितना मुश्किल है कि इन सारी चीज़ों में एडजस्ट करना? देखिए, मुश्किल तो होता है लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो प्रैक्टिस है ना, अपनी प्रैक्टिस में अगर चांस है नए गेंद का तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रैक्टिस में वो चीज़ लाजमी करूं. तो अगर बॉलिंग नहीं भी मिल रही तो मेरी ये आदत है कि मैं कोशिश करता हूं उस चीज़ के बारे में सोचूं ही ना कि जो मेरे हाथ में नहीं है. जो मेरे अब फ्यूचर में मेरे हाथ में चीज़ आएगी तो मेरी कोशिश होती है मैं उसके बारे में सोचूं. जैसे फील्डिंग है, मेरी कोशिश होती है मैं फील्डिंग में सोचूं कि गेंद मेरी तरफ आएगी, या बैटिंग का सोचूं कि बैटिंग में मैं कुछ कर सकता हूँ ताकि मेरी टीम को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो मेरे से. अच्छा, आपने बैटिंग की बात की, आज वो तो नजर नहीं है बट मैं ओवरऑल आपकी बैटिंग के बारे में भी बात करना चाहती हूँ बिकॉज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव सीन अ लॉट ऑफ दैट एंड यू हैव हैंडेड you've come down the order and contributed really well with the bat. तो उस पे क्या कोई खासी मेहनत की है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके मतलब कॉन्फिडेंस बहुत हाई नज़र आ रहा है. देखिए जी, जब जितने भी क्रिकेटर हैं मेहनत तो सारे कर रहे होते हैं लेकिन उस टाइम आपकी लक आपके साथ दे तो फिर ही है. मैं कहता हूँ कि टीम का जो कॉन्फिडेंस देने का आपको है ना, मैनेजमेंट का, इवन के कप्तान का, वो जो कॉन्फिडेंस आपको देते हैं ना, बैक करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपको आपकी मैनेजमेंट या आपके कप्तान बैक नहीं करता ना, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप एक मैच में दो, क्योंकि क्रिकेट है, इसमें आप हर मैच में परफॉर्म नहीं करते. आप 2 मैच में नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं या आप बाहर लोगों की बातें सुने तो आप तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते. आप सोशल मीडिया देखते हैं? नहीं जी, मैं जो अपने काम की हिस्ट्री की चीज़ें देखता हूँ बस. अपनी रील्स तो नहीं देख रहे होते अपनी बॉलिंग की? नहीं जी. अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप में एबिलिटी है कि बड़े शॉट मार लो, आप जो है वो तेज़ी से स्कोर करते हो. कभी कप्तान को आपने ये नहीं कहा कि मुझे भी कभी पावर प्ले में ट्राई कर लो? नहीं, ये मुझे काफ़ी लोग कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारी टीम की रिक्वायर्ड है वो कप्तान और कोच को पता है. वो जैसे यूज़ करना चाहें वो उनकी मर्ज़ी है. मेरी कोशिश होगी कि जहाँ पे भी वो यूज़ करें अपना 100% दूँ. एक और चीज़ जो हमने आपकी बॉलिंग में देखी है कि आप कटर्स वगैरह बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अगेन, इज़ इट अ केस ऑफ अगर आपने किसी बॉलर ने परफेक्ट करनी है वो स्किल तो किस तरह से करें? नेट्स में प्रैक्टिस करें या किसी कोच से बात करें? बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं T20 क्रिकेट में दैट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ डिलीवरी टू नो. देखें, कोच तो आपको हमेशा प्लान देते ही देते हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं सबको. इसमें वही चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है कि अगर कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं अपनी 100% अच्छी बॉल नहीं कर सकता. अब जैसे हमारे जैसे पहले मेंशन किया कि मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस आपको दिया हुआ है ना कि अगर आपने स्लो करनी है तो आपने कोई चीज़ सोचनी नहीं है, आप करें. अगर 6 की 6 करनी है तो करें, जो आपको बेस्ट लग रहा है. अंदर बॉलिंग गेंद मेरे हाथ में, तो उस टाइम मैं कप्तान हूँ अपनी बॉलिंग का, तो इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि अगर आपने 6 करनी है 6 की 6 स्लो करें. तो ये कहता हूँ ये बड़ी चीज़ मैटर करती है.
ठीक है जज़र ये बता दें कि अब 24 घंटे से कम में दोबारा पाकिस्तान टीम खेलेगी, इसका कोई इम्पैक्ट होता है जब टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा नहीं होता ऑन प्लेयर्स? थकावट या उस लिहाज से बात करें, रिकवरी की बात करें? देखिए एज अ प्रोफेशनल आपको ऐसे मैचेस बैक टू बैक मैचेस खेलने पड़ते हैं, तो रिकवरी मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल अब हमारे पास ऑलमोस्ट 20 घंटे तो हो गए, 20 घंटे काफ़ी होते हैं रिकवरी करने के लिए। जैसी आजकल चीज़ें आ गई तो रिकवरी आप देखें टेस्ट मैच में अगर पहले स्पेल में किसी बंदे को इंजरी हुई है तो वो दूसरे स्पेल में आके लंच के बाद आके अच्छी बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि अब क्रिकेट में भी चीज़ें काफ़ी एडवांस आ गई हैं, आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। मशहूर काफ़ी ज़्यादा है, मशहूर भी आइस बात भी आ गया है, मतलब all of that is there to help you recover. But thank you so much Fahim for your thoughts and all the best for tomorrow. Is it tomorrow? Well yeah, tomorrow, still tomorrow, क्योंकि अभी 12 नहीं बजे कल आपसे फिर मुलाकात होगी. And that was Fahim Ashraf for you on pitch side, just talking about his performance and how he's sort of evolved as a player, also the kind of backing that he's got from his management. Now we'll take another break, and when we do come back, we'll be joined by JP Dubey. Well, we're back on pitch side, just discussing this wonderful win of Pakistan over South Africa. I've got to say that it's been a fine comeback overall by them. And this is how things have gone in this T20 international series. The first one was at Rawalpindi, won by South Africa by 55 runs. And this one was a comfortable victory by Pakistan, which means the series is 1-1, and it's all set up nicely for Gaddafi Stadium tomorrow once again. Now, I've been joined by JP Dumini in the studio, all smiles once again. JP, South Africa, I mean, perhaps the way they started yesterday, it looked like they were looking really good. Where do you think they went wrong today? Well, I guess the question is always, is it a mindset thing? Was it an options thing? Was it an execution thing? So from Pakistan point of view, I think it's safe to say that the execution of skill with ball in hand was superb tonight. We spoke about the fact that the lines were a little bit off, particularly in the first T20. They auto-corrected beautifully, made sure they asked the right questions, and unfortunately South Africa did not have the answers. So I actually enjoyed what Donovan Pereira spoke about. He said, well, this is probably something that we just want to put behind us. What are the key learnings out of this game in terms of conditions? What are the things that we might need to alter? I don't think there's a lot there, because we have to give credit where credit is due. It was good bowling. Unfortunately, we didn't have answers in terms of execution from a South African point of view. But tomorrow is a new day. Can we start afresh? Make sure that we still want to put our best foot forward in terms of our mindset, our aggressive mentality. And it sets up for a beautiful finish, doesn't it? In terms of the series, 1-1. And I think here at the Gaddafi Stadium, we're in for a real treat going into tomorrow for the finale. Absolutely. It's all been set up nicely for tomorrow. Amir, Pakistan won the match in the power play. Just talk us through that performance of Salman Mirza. Look, it was so refreshing to see Pakistani bowlers actually responding to the captain's call, who elected to bowl first. And we haven't seen so many wickets taken by the Pakistani bowlers, and especially both of them. 3 by Salman Mirza and then chipped in by Naseem Shah as well. So that set the tone of the game. And for me, the position was there. And they exploited the conditions very well, and rest was history. And I think they keep on, if they keep on exploiting the new ball like this and the conditions like this, it'll augur well for Pakistan in this series. Is there pressure on a player when they are replacing, let's say, like a premier fast bowler of Pakistan, Shaheen Shah Afridi, was rested? But is there any kind of pressure for a player who's coming in their place at all, or do they take it in their stride and think, okay, this is my opportunity now? I think if you're a bench player and you have the talent, and you are waiting for an opportunity, as a player, you need to be ready for it. And what we have seen from Salman Mirza, whenever he's been afforded an opportunity, he was ready for it. He made an impact, and I think the batsmen should do so as well. But today's performance, what JP said, I just want to add one comment. You can't afford to be impervious of danger all the times. I mean, you have to put in perspective, okay, I'm going to go hard against the bowlers, there'll be consequence. So I think that's what modern day cricketers, they have to realize. They have to learn to adapt to the conditions. You cannot
You cannot be one dimension all the times. Is it a case of misjudgment of conditions then? I mean, is that the way to put it from South Africa? They adjusted really well in Pindi, but just here, different conditions to what we saw in Pindi, slightly different. I think there'll be slight conversations around that for sure. What are the learnings? What could we do differently from an options point of view? There might be one or two points made around that. But more importantly, I think it was more the response from the Pakistani bowlers. They executed their skill really well. So when you're defending 110, you're always going to try and get ahead of the game early, and you're not necessarily going to execute your skills always perfectly. But what I loved about the Pakistan opening batters is they still came with that positive mindset. They took their options on. Saim Ayub in particular, there has been a lot of questions around one-dimensional in terms of leg side play, something that we spoke about, and he expanded his game, didn't he? He played shots through the offside as well, looked classical. There was a bit of flair about him again. There was a bit of a strut about him, and I think that's what we love about T20 cricket, the ability to be able to do that. The no-look shot behind square, but that opportunity came when the foundation was set, and I think that's what Amir is talking about, really setting a strong foundation. The power play was strong from a Pakistan point of view. They really put it to South Africa, and when you have a strong power play only chasing 110, it's tough to come back from. So when it got to a point where you can't come back from it, they put the foot down, and it was a convincing victory in the end. What did you like about Saim Ayub's performance today? Remember, we spoke about it, that left-handers, they prefer hitting the ball through offside. So we saw quite a few strokes played by Saim Ayub through the offside. And that actually gave him the confidence. And from there on, he was able to play his no-look stroke. It's all about spending time out there in the middle. Once as a batsman you do that, you're bound to gain confidence, and also you're going to regain your form. All right, since we are now looking ahead to tomorrow, it's going to be an absolute cracker, JP, because the series is 1-1, and we're expecting a full house once again, so there'll be a lot to look forward to in that regard. We'll just have a quick look at what we have for you in terms of PCB hunt schools that we've got for you, and that's basically to promote cricket, school cricket. That's what we're talking about. It's underway in 39 districts across Pakistan. It's a fabulous, fabulous initiative by the PCB Talent Hunt, and around 400 schools are taking part in the 40-over tournament, which is great. Like we said, this is where cricket starts, this is where you develop your skills, and the district champions will advance to the knockout stage, and the winner school will get an overseas tour as well. Don't forget, there'll be an overseas tour of the winner school. So the PCB will be also arranging a 2-day match weekend school league, followed by the 40-over tournament. So all these initiatives, again, like we said, they're brilliant because they do promote cricket overall within Pakistan and development of cricket. This is where it starts. So great stuff, PCB. Just a quick look at what's going to happen tomorrow then. We spoke about it at Gaddafi Stadium, Lahore. Once again, great crowd in today, so kudos to everybody who showed up, and I'm sure tomorrow is going to be even better, because remember, the series is 1-1. This is where it starts at 7:25 p.m. All right, thank you so much, gentlemen. Thank you so much, Amir and JP. It's always a pleasure to have you guys on pitch side. It's been a fabulous game of cricket, and the series is really, really looking good now, because we've just got one more game, and whoever wins basically takes the trophy. So plenty to look forward to in tomorrow's game. Until then, it's goodbye.